So hello guys, welcome to Group Guide, and today we are starting permutation and combination series. And this is the series lecture 1. And permutation and combination, so we are starting it. And firstly I want to tell you that it is pure logic based chapter. Pure logic based chapter. You will find the reason behind everything in this chapter. Okay, you have to uh, you have to understand this chapter from the scratch, that why is this happening, and what's the reason behind it, why we are multiplying, why we are adding, all these type of questions make you perfect in this chapter. That is why we called it the pure logic based chapter. And we start. So firstly we introduce this chapter from the basic, that you know because you all are J aspirants, so you must know what is r factorial. It is 1 into 2 into 3 to up to r. This is r factorial. For example, if we want to write 7 factorial, we will write 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. If we write 103 factorial, so 1 2 3 up to 103. Okay, so this is the factorial. Now second thing I want to tell, r plus 1 factorial upon r factorial. So you will find this, suppose r is 6, so 7 factorial upon 6 factorial, right? So what is this? It is 1 into 2 into up to 7 and 1 into 2 into up to 6. So there is 6 into 7, so it will get left is 7. So 7 is what? R plus 1. So if we uh, divide r plus 1 factorial by r factorial, the answer is r plus 1. It is common sense. Okay, so now next, if we divide r plus 2 factorial by r factorial, so it will be 1 into 2 into, it is up to r plus 1 r plus 2. Okay, now niche 1 plus 2 is equals to r, it will cut. So r plus 1 r plus 2, it is r square plus 2r plus r plus 2 is equals to r square plus 3r plus 2. It is quadratic. Okay, you have to remember it. These are all are basics. Now very important, you have to learn that 0 factorial, you have to guess what. No, it's not 0. 0 factorial is 1. Yes, the reason behind it, there is a reason, but it is not in this chapter. Okay, there is a reason of that why 0 factorial is considered as 1. Sometime it is also considered as 0. This is very interesting fact, but in JEE preparation we will use 0 factorial as 1. There is a reason behind it, but we will not discuss here because we have to focus on the chapter permutation combination for JEE. Okay, so 1 factorial is equals to 1, 2 factorial is equals to 2, 3 factorial is equals to 6, 4 factorial is equals to 4 3 is 12 and 12 is 24. 5 factorial is equals to 120. I guess 5 or 20 120. 6 factorial, I guess 760. This you have to learn. Okay, 7 factorial is equals to 5040. 8 factorial 40320 till, okay, I guess you all know. So till 8 factorial it is okay. So I want to tell that learn it. Okay, it's very important. It will increase the speed to solve the question in the JEE question paper. Okay, so there is very important formula, actually not important formula, it is the basics of permutation and combination. The very basic is the formula of NCR. It is n factorial, r factorial and n minus r factorial. Okay, write it. So if we want to calculate, applying this formula, if we want to calculate NC0, so we will n factorial, 0 factorial and n minus 0 factorial. Okay, so what we will do is that 0 factorial is 1
and n factorial, so 0 factorial is 1, so 1 into, and n minus 0 factorial, it is n factorial, so the answer is 1. So the answer is 1. Okay, so any number, actually any number, if we actually the meaning of C is, if we understand what's we write NCR, so this its meaning is choose R distinct objects from n distinct, okay, objects. Okay, the meaning of NCR is choosing R distinct objects from n distinct objects. If we try to understand in हिंदी, so इसका मतलब ये होता है कि अगर आप R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से, सॉरी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट या चूज़ करना चाहते हो, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आप कुछ भी चूज़ नहीं करना चाहते हो, तो इसका तो एक ही वे होता है कि आप चूज़ ही ना करो, तो इसलिए एक आंसर आता है, ठीक है ना। जैसे 4 बुक्स पढ़ी हैं और आपको कहा जाता है कि इनमें से एक भी नहीं चुनना है, तो कितने वेज होंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ वेज होता है, नंबर ऑफ वेज। ओके, ठीक है ना। तो हम लोग को कहा जाएगा कितने वेज होंगे, कितने वेज होंगे कि हम लोग 4 जो नोटबुक्स पढ़ी हैं आपके सामने, उसमें से एक भी ना उठाएं। तो वो एक ही वे है कि आप कुछ करें ही ना उठाएं, तो एक ही वे है, ओनली वन वे इज देयर। ओके, तो आंसर इज 1, ठीक है ना। 0 वे इज इलॉजिकल आंसर, 0 इज नॉट logic based answer, because there is one way that we will not do anything to pick up, so the answer is 1. So 0 is not, 0 is not answerable. Okay, what you are trying to answer that कि हम कुछ भी ना उठाएं, तो आप कैसे आंसर करोगे कि हाँ एक वे है, हम नहीं उठाना चाहते, तो उसका एक ही वे है कि हम उठाए ही ना, इसलिए आंसर बनाया, ठीक है ना। सो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, some important actually we can say some important terms actually. So NC0 is 1, NCN is also 1, you can solve it in your home. NC1 is equals to n, okay. NC2 is we can solve 2 factorial n minus 2 factorial, so if we solve it we will get n minus 1 upon 2. This is the answer. Okay, you can solve it, it is very easy. If you're not able to solve it, because if you are in class 11th, so you can just see it. So it is n factorial, it is 1 into 2 into 3 up to n, okay. It is 2 into 1 into 2 into is equals to n minus 1 basically, okay, and n minus 2, ठीक है ना। So it is n minus 2, so this and this part get cancelled, and the answer will n minus 1 upon 2, okay. And इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम उसको अगर हम NC2 को अगर हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो इतने नंबर ऑफ वेज होंगे, n माइनस 1 बाय 2, ठीक है ना। पहले का तो हमने हिंदी वर्जन समझा दिया क्या कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक भी सिलेक्ट करने का कितने वेज होंगे, एक ही वे होगा कि आप कुछ करो ही ना, ठीक है ना। अब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सारे सेलेक्ट करने हैं, तो उसका भी एक वे होगा, कैसे, आपके सामने चॉकलेट्स पड़ी हैं, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट चॉकलेट पड़ी हैं, अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स पड़ी हैं, कैडबरी की है, ठीक है ना, 5 स्टार है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की है। तो आप क्या करना चाहते हो कि हमने कह दिया कितने नंबर ऑफ वेज होंगे सारी उठाने के एक बार में, तो एक ही वे होगा कि सारी उठा लो, ठीक है ना। ये मैटर नहीं करता है कि आपने पहले कौन सी उठाई बाद में कौन सी उठाई, आपको एक्चुअली ये मैटर नहीं करता है कि आपने पहले कौन सा चूज़ किया बाद में कौन सा चूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, ये मैटर अभी नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि n ऑब्जेक्ट्स में से n को सिलेक्ट करने के वेज कितने होंगे,
ठीक है ना। अगर आप सारी उठाओगे तो फ़ोटो तो एक ही आएगी ना, चाहे डेयरी मिल्क उठाओ या पहले आप कोई भी चॉकलेट उठाओ, बट आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एन में से एन सेलेक्ट करनी, तो आपने एन सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना। तो पहले कोई भी उठाई हो, बट जब आप एन सेलेक्ट कर लोगे, एक बार सारी उठा लोगे, तो फ़ोटो तो सेम ही आएगी, ठीक है ना, फ़ोटो तो सेम ही आएगी। तो उसका तो जो वे होगा वो वन ही होगा, ठीक है ना, उसका जो वे होगा वो वन ही होगा। एक ही वे होगा कि आप सारी उठा लो एक बार में, समझ में आया। अब जैसे 7 चॉकलेट्स हैं, ठीक है ना, ये वाला मैं समझा रहा हूँ, NC1 वाला, ये समझ गए, ये समझ गए। NC1 क्या कह रहा है कि 7 चॉकलेट्स हैं, उसमें से हम लोग को एक उठानी है, तो कितने वेज होंगे एक उठाने के? 7 वेज होंगे, एक एक करके आप उठाओगे। क्या करोगे? एक एक करके उठाओगे, उसके अलावा कोई भी वे नहीं है, ठीक है ना। चाहे आप पहले कोई भी उठाओ, चाहे पहले कैडबेरी को उठाओ, चाहे पहले कोई भी चॉकलेट उठाओ, आपको एक ही उठानी है एक बार में, तो उसके 7 ही वेज होंगे, ठीक है ना। यू कैन मैथमेटिकली कैलकुलेट इट बाय द NCR formula, which is NCR is equals to n factorial r factorial n minus r factorial. So NC1 is equals to n factorial 1 factorial n minus 1 factorial, which is 1 into 2 into 3 into n minus 1, and n factorial 1 to 3 into 3 n minus 1. It will cut, and it will actually gives, sorry, it will actually gives n. Okay, answer. Okay, so basically if you understand by making the story in your mind, this chapter make the sense to the question, to your solution. And if you will understand the sense of the question, what is the question asking actually, ठीक है ना, actually in the world, what's happening there, which is related to permutation and combination, then you'll be easily capable of solving the questions of permutation and combinations generally. Okay, so स्टोरी बनाना आना चाहिए आपको। सो एक नोट लिख लो आप कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए आपको स्टोरी बनाना आना चाहिए। ओके, सो इफ वी समराइज, राइट द समरी नाउ। If we summarize what we have done till now is r factorial is 1 2 into 3 into 4 into 5 up to r, and what is r plus 1 factorial upon r factorial is r plus 1. What is r plus 2 factorial upon r is r square plus 3r plus 2. Now second phase, this is our first phase. Now second phase, 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 5 factorial 6 factorial 7 factorial 8 factorial. 1 factorial is 1, you know, 2 6 actually 4 12 24 120 760 5040 40320. Okay, now there is a formula of NCR, n factorial r factorial n minus r factorial. NC0 is equals to 1, NCn is equals to 1, NC1 is equals to n, and NC2 is equals to n minus 1 by 2. Okay, so today we have done this is the first lecture of a series, and then in this we have done this, and all this you have to remember for solving the questions. This is nothing, this is, we have not yet start the permutation combination, we are just building the basics. This is the mathematical tool which is required to understand the permutation and combinations, so you have to just focus. So if you like this lecture, please like and subscribe group cat